Good morning, everybody. My name is Swapnil, and I welcome you all to Vidyadhan Academy. And today we are going to have a very interesting, very wonderful discussion about the RMS 2023 मैथमेटिक्स पेपर. सो हम उस मैथमेटिक्स पेपर के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट का भी जो है एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा. सो आपको जो है एक तरीके से रिवीजन भी होती चली जाएगी. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले we can get started with our today's interesting RMS 2023 मैथमेटिक्स पेपर डिस्कशन. मैथमेटिक्स पेपर के बाद हम इंग्लिश का भी डिस्कशन करने वाले हैं, वो अलग वीडियो होगी. उसके बाद जनरल नॉलेज और उसके बाद इंटेलिजेंस की भी वीडियोस आएंगे. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है. RIMC के रिगार्डिंग, RMS के रिगार्डिंग, सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो काफ़ी काफ़ी यूजफुल रहेगी आपको बहुत सारी एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग नवोदय ऑल्सो एंड स्कॉलरशिप एज वेल. राइट. सो उसके लिए आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिया हुआ है वो प्रेस करना है, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द today's maths paper discussion, students. So here जैसे मैंने बोला था आपको कि मेरे पास 2023 का मैथ्स का पेपर का सेट ए है. सो सेट ए के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चंस तो सभी सेट में सेम है, जस्ट ऑर्डर चेंज रहेगी. कुछ क्वेश्चन सेट्स में मैथ्स पहले रहेगा, कुछ क्वेश्चन सेट्स में लास्ट में रहेगा, कुछ क्वेश्चन सेट्स में इन बिटवीन दोज 4 और रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स ऐसे रहेगा. सो द ऑर्डर विल चेंज, क्वेश्चंस विल मोर और लेस रिमेन द सेम, रैंडमाइजेशन होगा. ठीक है. सो विद्याधन एकेडमी, जैसे आपको पता है कि काफी सालों से विद्याधन एकेडमी स्टूडेंट को ट्रेन कर रही है, स्टूडेंट को गाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड सैनिक स्कूल्स ऑल्सो. राइट. सो definitely it is going to be a wonderful opportunity for all of you. So without any further delay, let's get to the first question that we have for today. Now, before moving further, let me introduce myself. Some of you do not know my name. My name is Swapnil, and I am a maths teacher here in Vidyadhan Academy. I was a part of Baiju's classes also. I am a ex-Baijuite, so I was a maths teacher in Baiju's as well. I was working with the Bansal classes as well, and I have completed my engineering in civil. Right. So as far as uh, definitely maths is concerned, I love the subject the most, and I'm very much interested to teach the students math, the different tricks, and the importance of maths in daily life. Okay, so definitely do follow my channel. सो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which is which will exactly divide 200 and 320. So 200 and 320 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑप्शन में से हमें चूज करना है. सी, now sometimes you might be seeing that the spelling is wrong here. Correct, the greatest का spelling गलत है, लेकिन you should understand the question is not, spelling mistakes can be there, typing mistake होती है कई बार. So it is not that कि question गलत है. सो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, उतना हम समझ सकते हैं कि उनको ग्रेटेस्ट नंबर ही बोलना है. सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320. सो टू नंबर से 200 एक है और दूसरा है 320. सो ये 200 and 320 दोनों को डिवाइड करने वाला इन चार ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट नंबर. सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन वाइज अगर हम जाएंगे, सो ऑप्शन ए बोल रहा है 10. 10 से डिवाइड होता है
200 and 320, yes, it is divisible. Next 20, 200 and 320, is it divisible by 20? Yes, it is divisible. Correct. So a से divide होगा, 10 से divide होगा. If we talk about 16, is 200 divisible by 16? Definitely not. So ये option जो है वो नहीं आएगा. और last option है 40. So 40, is it, is 200 divisible by 40? Yes. 320, is it divisible by 40? Yes. So now हमें मिले हैं 10, 20 और 40 में से हमें चूज करना है largest और you can say the greatest number. So यहाँ पे greatest number which is dividing 200 and 320 will be 40. Hence, the correct option here is going to be option D, which is 40. क्लियर? काफी सरल और सिंपल क्वेश्चन, आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 152 क्वेश्चन ऑफ सेट ए. बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर एलसीएम विल बी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. करेक्ट. So those two numbers which is having only one common factor, we call them as a co-prime number, right? So अगर एक ही common factor है, ऐसे दो numbers को हम बोलेंगे co-prime number, right? For example, we can say 8 and let's say 15. Now if you factorize 8, we know the factors of 8. क्या क्या होंगे factors? Factors of 8, just a second. Factors of 8 are going to be 2 into 2 into 2, and all of you know that 1 is definitely a factor of each number, or 15 के factor 1 into 3 into 5. So if you now see, only common factor between 8 and 15 is 1. So definitely we can say 8 comma 15 is, or you can say they are co-prime numbers. Correct. So this is a basic concept of co-prime number. Now यहाँ पे दिया क्या गया है, product of two co-prime number is 117, then their LCM is going to be. So if दोनों co-prime number का product 117 है, so definitely उनका LCM जो होगा, LCM is going to be product of those two co-prime numbers. So product of two numbers will also will be the LCM, because there is nothing common. So everything we are going to multiply and find the LCM. So product of two numbers will be the LCM. So product already दिया हुआ है, which is 117. So यहाँ पे correct option क्या होगा? Option A, which is 170. Right? Simple question again, छोटा सा concept था. बढ़ते हैं next question की तरफ, 153. Now 153 question जो है, it is based on the simplification. Correct? यहाँ पे आपको simply दिया हुआ है 1 2 3 4 5, right? 12,345 multiplied by 15 minus 2,469 multiplied by 25. Now many of the student, what they are going to do is they will multiply this part, they will multiply this part, and then they will subtract. आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा, बट इट विल टेक मच टाइम. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. उस टाइम में आप दूसरे कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सिंपल एक टेकिंग आउट द कॉमन नंबर आउट एंड देन सिंप्लीफाइंग, अगर ये टेक्निक, ये ट्रिक अगर हम यूज करते हैं तो काफी सिंपल तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा. तो चलिए, if you see here, it is 12,345 into 15 minus 2469 into 5. Now ये number तो आपको पता है 15 and 25. Can I say I can take 5 common from both of these? Definitely. Correct. Now whether 1000 to 12,345, is it divisible by 2,469? See, now how you are going to check that is simply if you see 2469 is having 9 in the unit place. And if you look at 12,345, you can see there is 5 in the unit place. Now, what should be that number if I multiply it with 9 so that I can get 5 in the unit place? So, the 5 in the unit place I can get only after multiplying it by 5, और उसके बेसिस पे आप
डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यहाँ पे 2400 है, सो 2400 इंटू 5 अराउंड यू कैन से 12,000 होगा, और उसके ऊपर है 69, सो मोर देन 12,000 होगा, सो डेफिनेटली वी कैन टेक 2469 कॉमन. दैट मीन्स 2469, if 12,345 is divided by 2469, we get 5. Now here, if we take 5 common, 3 will be remaining, minus 2469. If I take common, nothing is remaining, that is 1 will remain, and 5 common, so 5 will remain. Now simplify karo, 5 into 2469 in bracket 5 into 3 is 15 minus 5, so it will be 5 into 2469 into 10. Now ये जो multiplication है, ये already हमने यहाँ पे देखी है, 2469 into 5. What is that multiplication? 12,345 into 10 जो बचा है, so ये देगा हमें 1,23,450, which is nothing but option D. क्लियर? सो सिंपल, ये आपको लग रहा होगा एक्सप्लेनेशन में लेंदी है, लेकिन ये सबसे इजी है. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, हम नंबर को कॉमन लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 153. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट, काफी सिंपल क्वेश्चन. हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड? सो काफी लोगों ने मुझे आंसर ऑलरेडी दे दिया है, आई नो. क्यूबॉइड आप सबको पता है, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, करेक्ट. सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्यूबॉइड. सो नाउ इफ यू सी, this is going to be the cuboid, and question is simply asking how many faces are there. So if you look at here carefully, ये पीछे वाला फर्स्ट फेस, ये साइड वाला सेकेंड, फ्रंट वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ. सो साइड के 4 फेसेस, टॉप वाला फिफ्थ होगा और बॉटम वाला सिक्स. सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, विच इज 6. सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19. 19 से डिविजिबल होने वाली स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी होगी? अगेन, यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे. एक स्टूडेंट वो जो सारे ऑप्शन लेकर डिवाइड करेंगे और फिर चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स इससे टाइम, कैन से यू नो लिमिटेड टाइम वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. टाइम कैसे सेव करना है? देखिए, what is it is asking the smallest 5 digit number that is divisible by 19. 19 से divisible होने वाला. Now if you see, if there is 0 in the unit place, will it be divisible by 19? Think of it. Definitely not possible. Correct. If there is 0 in the unit place, it will not be possible. Right. You can try dividing 10,000 by 19. Right. Now if, now how many numbers are remaining? You can see 10,019, 10,013, 10,032. Now the question is asking which is the smallest 5 digit number. Now let's quickly divide 10,019 by 19. Right. Now this will be 19 fives are, we know 95, correct. So 5 is the remainder, then 51, 19 twos are 38. So we can say this will be 13 remaining, correct, and this will be 9, and there is no 139 is not there in the table of 19, so ये तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा. नाउ सी, अब आप 1032 और 1013 देखेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं देखेंगे. क्यों? क्योंकि अभी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, सी और बी, और उसमें से आपको पता है क्वेश्चन इज आस्किंग स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. सो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 10,013. डेफिनेटली यही आंसर रहेगा. चेक करके देखिए, 10,013 is it divisible by 19? Again 19 fives are 95, 5 remaining, 19 twos are 38, then 13 remaining 133, and 19 sevens are 133, remainder is 0. Question was asking smallest number and हमने find out किया है. ठीक है,
सो ऐसे करके हमें टाइम सेव करना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ neatly you write, or it's not about when it is the options are given to us, we have to save maximum of our time. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने होते हैं. तो नॉट ओनली मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके भी क्वेश्चंस हमें करने होते हैं. सो उसके लिए ज़रूरी होता है कि टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, और करेक्ट आंसर भी निकालना चाहिए. तो दिस ट्रिक यू कैन यूज, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 156. द क्वेश्चन इज सेइंग मीडियन ऑफ द डेटा एंड द डेटा इज गिवन. कुछ वैल्यूज दिए हैं, उसका मीडियन हमें फाइंड आउट करना है. आप सबको मीन के बारे में पता होगा. मीन सिंपली इज नथिंग बट एवरेज. सिंपल लैंग्वेज में हम एवरेज भी बोलते हैं, जिसके क्या कर सकते हैं हम, वो सम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड अपॉन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. Now, median is also representing such type of a value. मतलब क्या? Median is simply the middle value of a data. अब ये middle value हम कैसे निकाल सकते हैं? So first thing, अगर ये जो डेटा सारा दिया है, first of all आपको ऑब्जर्व करना है whether it is in ascending or descending order. अगर ये ascending और descending order में नहीं है, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उसको ascending या descending order में लगाएंगे. सो चलिए लगाते हैं. ये जो नंबर्स दिए हैं उसका असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो आएगा 12, उसके बाद दो बार 12 है, सो 12. देन देयर विल बी 13, 13 भी दो बार है. देन नेक्स्ट वी हैव 14, 14 is three times 14, and then we have at last which is 19. Clear? Now you can see this becomes the ascending order of a given data, राइट. एक बार हमारी असेंडिंग ऑर्डर बन गई तो फिर सिंपली हमें क्या करना है, काउंट करना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर्स आर देयर. ओके. सो इफ देयर आर 8 नंबर्स, डेफिनेटली वी कैन से, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8. वन मोर इज मिसिंग, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ पे 16 हमने मिस कर दिया था, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 16 और फिर उसके बाद है 19. सो अभी काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? टोटल ऑब्जर्वेशंस दे आर 9. सो इस बेसिस पे हम मीडियन डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे आर ऑड, सिंपली मिडिल वैल्यू जो होगी वो होगी उसकी मीडियन. सो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे? मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल 9 है, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फिफ्थ नंबर विल बी द मीडियम. सो कैलकुलेट करें यहाँ से. फिफ्थ नंबर कौन सा है? 12, 12, 13, 13 एंड 14, ये फिफ्थ नंबर है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, विच इज 14. क्लियर? सो मीडियन का कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं 157. सी 157 क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है. द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे डायरेक्टली देखते ही आंसर हम सबको पता चल जाता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99,999. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 158. द क्वेश्चन इज सेइंग द डिफरेंस बिटवीन द predecessor and successor of 1 million. Now see, 1 million का predecessor and successor. Now 1 million की जरूरत ही नहीं है. Simply if we take 5, for example I am taking 5, I am not taking 1 million, right? कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है. 5 अगर मैं लेता हूं, सो 5 का प्रेडेसेसर क्या होगा? प्रेडेसेसर आपको सबको पता है. प्रेडेसेसर मींस द नंबर विच कम्स बिफोर दैट नंबर. सो 5 का प्रेडेसेसर होगा 4. और 5 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मतलब उसके नेक्स्ट नंबर, उसका नेक्स्ट नंबर जो आएगा. सो 5 के बाद आएगा 6.
So now if I take a difference between successor and predecessor, if you see 6 minus 4, the difference is going to be 2. So same thing applies to whatever number you take, successor and predecessor का difference यहाँ पे option B ही आएगा, which is nothing but 2. यहाँ पे 1 million होगा, 2 million होगा, 3 million होगा, 5 million, doesn't matter. If you take a simple thing, 5 predecessor होगा 4, successor होगा 6, difference आ रहा है 2, so यहाँ पे भी same case होगी in case of 1 million. Clear? Simple question. Next, 159 question. How many three-digit numbers are there in all? In all, how many three-digit numbers are there? So इसका definitely answer आप सबने I hope दिया होगा. So there are 900 three-digit numbers in all. So आप you can say you will start from 100, correct? So till up to 900 you can say. Again three-digit numbers are there, correct? So 100 का एक होगा, then up to 900, and three digit numbers are up to 999, so you can definitely say it will be 900, right? Next, 160 question. The difference between the greatest two digit number and the least two digit number, काफी simple question है. Difference between greatest two digit number, greatest two digit number कौन सा होगा? 99 होगा. And least two digit number कौन सा होगा? 11 हो 10 होगा, correct? So लीस्ट मतलब सबसे छोटा टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर. 99 minus 10, 89. Option B will be the correct answer. Simple. Next, the sum of three consecutive integers is 51. The middle one is going to be. Now आप सबको पता है consecutive integers means what? Consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले, correct? One after the other. So थ्री consecutive number की sum जो है वो 51 है. We have to find the middle number. Do we know the consecutive numbers? We do not know. So let us assume, let the numbers be. अगर फर्स्ट नंबर मैं x कंसिडर करता हूँ, नेक्स्ट होगा x प्लस वन, नेक्स्ट होगा x प्लस टू, और हमें क्या दिया है? ये तीन नंबर की सम, मतलब x प्लस वन प्लस x प्लस टू will be equal to 51. So 3x plus 3 will be equal to 51. So 3x will be equal to 51 minus 3. So 3x will be equal to how much? 48. X will be equal to 48 upon 3, which is nothing but 16. मतलब एक नंबर हमें मिल गया है 16, सेकेंड होगा 16 प्लस वन 17, थर्ड होगा 18. हमें पूछा गया है मिडल नंबर, सो इट विल बी 17, विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी. सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्विकली करेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है. इस क्वेश्चन में भी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर whose area is 700 square meter and breadth is 25 meter. Now we have seen, or all of you know, that area of rectangle, it's a playground, so it can be anything. So area of like rectangle, we know the formula, it is length into breadth. You have already studied. Now यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज. एरिया दिया है 700 स्क्वायर मीटर, लेंथ वी हैव टू फाइंड, और बेड दी है 25 मीटर. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ. लेंथ विल बी इक्वल टू 700. ये 25 मल्टीप्लिकेशन है में है. if I take it to other side, it will be in division, and now this will be 25 twos are 50, 20 remaining, and 25 eights are, so it is going to be 28 meter, correct? But the question is asking here in centimeters, and there is, how all of you know that how we can convert this to meter to centimeter. But if you see the option, you can see there is no option which is saying 2800 centimeters. So definitely this, either the option of the questions are wrong, wrongly printed. शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन
कैंसिल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन के मार्क सबको दिए जाए। क्लियर? सो दैट इज द डिसीजन ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, right? They will take this into account, but the here if you see, if they are asking in centimeters, this 28 should have been multiplied by 100, and एक ऑप्शन वहां पे होना चाहिए था 2800 सेंटीमीटर्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज 30 प्लस 7 प्लस 2 बाई 100, करेक्ट? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 30 प्लस 7, ऑल ऑफ यू नो इट इज 37 plus 2 upon 100. Now how we convert this fraction into decimal? First we will write the numerator as it is. Count number of zeros in the denominator. कितने जीरो है? 2 जीरो है। मतलब counting from the right side, you will put a decimal point after 2 digits starting from right. So एक digit already है, उसके बाद एक zero, and then we are going to put decimal. So 37 plus 0.02, so it is going to be 37.02. Option D is the correct answer, right? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100। ओके, not 100. The sum of two numbers is 11,009. One of them is 9,999. Other number is going to be simple. If I say sum of two numbers is 10, one of the number is 8, दूसरा नंबर क्या होगा? डेफिनेटली 2 होगा। सो हमने कैसे कैलकुलेट किया? टोटल में से हमने वन ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्ट किया, सो हमें जो आंसर आया वो हो गया हमारा सेकेंड नंबर। सो सेम थिंग हियर, सम दी है उसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 9,999, जो बचेगा वो आएगा हमारा आंसर। सो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली 1010, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज 1010। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.680 into 12, 8.680 into 12, right? Now start multiplying this, right? Now if you see, this now needs to be multiplied. As I always tell you, multiply without the decimal and then put the decimal point, correct? Now if we assume that there is no decimal, it will be simple multiplication. All of you can do this. So 12 into 0, it will be 0. 12 8s are, definitely it will be 96. Then it will be 9 carry. 12 6 are 72 plus 9 81. And definitely 8 carry. Then it will be 96. 96 plus 8, 104. And now we have to put a decimal point after 3 digits. So 1 2 3, decimal point will be here. So 104.16, which is option B, right? Simple multiplication question. Next, the greatest 8-digit number with the given digits will be what? Now greatest number पूछा है, so अगर greatest number पूछा है, so we should arrange the given digits in descending order, right? So चलिए order descending order में definitely लगाते हैं। So first होगा 8, correct? Then होगा 7, right? Then it is going to be 6, correct? Then it is going to be 5. Then we have one more 5. Then we have 2. Then we have 1 and then 0. So this is the correct number that is getting formed. Simply if we arrange the given digits in descending order, we get the greatest number. उसकी भी जरूरत नहीं है। Simply again one more trick हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? See, यहाँ पे there is only one 8, but if you see in this option there are two 8s, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगेन दो 8 है, सो ये नहीं होगा। यहाँ पे वी हैव टू 7s, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो सिंपली without descending order also you can get the answer D, but you should have that presence of mind in the exam, correct? और आप सब प्रैक्टिस से ये डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 167, सबसे छोटी मिश्रित संख्या है। द स्मॉलेस्ट composite number is what? So if you see,
definitely we can say the smallest composite number is going to be 1. Next, if 3 upon 4 is equivalent to x upon 24, then find the value of x. Question is saying 3 by 4 is equivalent to x by 24. So हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ इफ यू सी इक्विवेलेंट है मतलब उनकी वैल्यू सेम रहेगी. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 24 है. सो हाउ कैन आई गेट 24? If I multiply 4 with 6, I can get 24. The same thing I'll apply to the numerator also. If I multiply by 6 in the numerator, I'll get this part. So 3 into 6 is going to be 18. So यहाँ पे x की value होगी 18, which is nothing but option D. Right? चलिए. Next question. Amit exercises every 12 days and Ishan every 8 days. Ajay and Ishan both exercised today. How many days will it be until they exercise together again? Now, अमित जो है 12 days में एक्सरसाइज करता है एंड ईशान 8 days में एक्सरसाइज करता है. इफ दे बोथ एक्सरसाइज टुडे, नेक्स्ट टाइम कब वो टुगेदर एक्सरसाइज करेंगे? सो इट इज गोइंग टू बी LCM of 12 and 8. And now if you see LCM of 12 and 8, LCM of 12 and 8 is 24. So after 24 days, they will exercise again together, right? So it is going to be option A, which is 24. Next, 170th question. Find missing number in the box. Missing number हमें find out करना है. चलिए. So let's say ये box है. Now this is to 5. Is to का मतलब आप सबको पता है, it is nothing but we can write it in the form of a division or in a fraction. This side sign shows the proportionality symbol, which is nothing but these two fractions are equal. So it is going to be 12 by 60. See, similar type of question हमने previously अभी देखा था, right? जहाँ पे हमें x की वैल्यू पता करनी थी. So similar type of question है. यहाँ पे 5, if I multiply by 12, I get 60. Correct? So what should be this number so that I am going to get 12? That means I should divide it by 12. So if I divide 12 by 12, I'm going to get this number. So I can say if 1 is multiplied by 12, I'm going to get 12. So इस missing box में क्या आएगा? It is going to be 1. So it is option A. Simple. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. The next question is this. Ages of Ajay, Amit and Satish are 10, 12 and 14. Find the average. So simple. Ajay ka age है 10 years. The age of Amit is 12 years and age of Satish is 14 years. We have to find the average. Now see, average आप सबको पता है, it is nothing but sum of the given numbers. So 10 plus 12 plus 14 and divided by how many members are there? You can see 3. So divided by 3. So 10 plus 12 plus 14. So 14 plus 12, we can say it is 28. 28 plus 10, 38, right? 26 plus 10, 36. 36 divided by 3. So which is nothing but 12. So option B is the correct answer. इनका average आएगा 12. Correct? Great. I hope ये question भी आपको समझ आया होगा. Next, 172. The question is saying, I am a prime number. If you subtract 1 from me, I will become divisible by 9. Who am I? Okay. Now, it is going to be a prime number. If you subtract 1 from me, I will be divisible by 9. Now see, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? If you subtract 1, we can go otherwise. We can go in a reverse way. ऑप्शन में से भी हम जा सकते हैं या फिर इक्वेशन फॉर्म करके भी जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दैट प्राइम नंबर एज x, नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर, I get divisible by 9. So can I say
x minus 1 is going to be equal to x by 9. So now if you cross multiply this, 9x minus 9 equal to x. So we can say 9x minus x, it is going to be 8x equal to 9. So x will be equal to, definitely we can say it will be 9 by 8. But see here, it is saying that I am a prime number, right? Now, if it is a prime number, we have to be go through the option itself, because here we are not getting a prime number. So the equation approach जो हमने अभी यूज किया है वो हमें नहीं करना होगा. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बाय द ऑप्शन, बट हमें रिवर्स वे में जाना है. सो रिवर्स वे में हम कैसे जा सकते हैं, चलिए. नाउ रिवर्स वे में, इफ यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम मी, सो गिवन ऑप्शन में हमें करना है वन ऐड. So 29 plus 1, if you see, it is 30. Is it divisible by 9? No. So first option nahi hoga. Next, 17 plus 1, 18. Is it divisible by 9? Yes. If you see option B, 19 plus 1, is it divisible by 9? No. 20, not divisible by 9. And 11 plus 1, which is 12, again, it is not divisible by 9. So option C correct रहेगा, which is nothing but 17. So ऑप्शन में से भी हमें कभी कभी जाना पड़ेगा, और वी हैव टू डिसाइड इन विच वे वी हैव टू गो. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन मैंने रिवर्स वे में यहाँ पे ऐड करके उसको डिवाइड किया है, बिकॉज दैट इज अ अननोन थिंग. सो हम यहाँ पे रिवर्स वे में जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 173. नाउ हियर A is given, B is given, C is given. We have to find the value of A, B, C. Correct. Simple है. A की वैल्यू है 18, B की वैल्यू है 10, C की वैल्यू है 6. सो हमें फाइंड आउट करनी है A इंटू B इंटू C की वैल्यू. सो 18 इंटू 10 इंटू 6. So it will be 18 into 60. So we can say it is going to be 1080. That is, you can now see again one more question here which is having wrong options, right? Here there is one option called 108, but our answer we are getting is 1080, and this is the correct answer, but there are no options. So again, this type of question, there are chances that it may get cancelled, or there are chances that the marks will be distributed, right? Next, the cost price of 20 books is same as the selling price of X books, right? If the profit is 25%, then the value of X is what, right? See, the cost price of 20 books is same as the selling price of X book. Now we do not know anything, correct? Now let us assume, let the cost price of 20 books, let us simply assume the cost price of one book, cost price of or CP of one book, let us assume as rupees 1. So cost price of 20 books कितनी होगी? 20 books की cost price 20 rupees. Now यहाँ पे 25% profit हुआ है, correct? Profit is 25%, correct? Now can we find the selling price? Yes. कैसे find out कर सकते हैं? You can use the direct formula also, or we can say it will be cost price plus 25% of the cost price. Cost price में add हो जाएगा. So 25 4 जा 4 5 जा 20. So यहाँ पे CP है 20 plus 5. So selling price बन गई 25. So the value of X is definitely going to be 25, which is nothing but option A. Clear? चलिए बढ़ते हैं next question 175. A boy gets 25 marks out of 80 and fails by 15 marks. We have to find percentage of passing marks. Now, if
you can see it here. He is getting 25 marks, but still he is failing by 15 marks. मतलब उसको 25 मार्क्स मिलने के बाद भी फेल हुआ है कितने मार्क्स से? 15 मार्क्स से। मतलब इसके अगर उसको 15 मार्क्स ज्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। करेक्ट। सो हियर 40 मार्क्स इज अ पासिंग आउट ऑफ 80। सो 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, सो उसका परसेंटेज क्या आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। So we can say this will be 42s, this will be 50. So we can say it will be 50%. So option D is the correct answer. Correct? D यहाँ पे correct answer होगा। चलिए next question. Complete the series 1, 8, 27, 64 and so on. Now if you see carefully this, देर इज अ सो मच ऑफ गैप। 1 और 8 में काफी गैप है, 8 और 27 में काफी है, 27 और 64 में भी बहुत ज्यादा गैप है। सो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक इन टर्म्स ऑफ अ पावर। यहाँ पे डिफरेंस नहीं चेक करना है, यहाँ पे पावर चेक करनी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। सो नेक्स्ट ये जो आंसर होगा ये 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब इज 125। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। आई होप you are getting this right. Next, find the area of a square park whose perimeter is 640 meters. Now एक square park है, उसका perimeter हमें दिया है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इंटू साइड। सो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। 640 मीटर्स इज नथिंग बट 4 इंटू साइड। सो यहाँ पे अगर हम साइड फाइंड आउट करें 640, ये 4 इफ आई टेक इट टू अदर साइड डिवीजन में जाएगा। सो दिस विल बी 160 meters, राइट? नाउ if this is 160 meters, we can find out the area. Correct? So area of square, we know that it is side square. So यहाँ पे हमें साइड मिल गई है 160 मीटर। सो 160 इंटू 160। सो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? हमें पता है 16 का स्क्वायर है 256 on and these two zeros. So this will be, you can say 25,600 meter square will be the area of a square park. Clear, simple, nothing difficult about it. Next, the product of two numbers is 10,800. If one of the number is 90, what is the other number? See, product of two numbers is given. Let's say एक जो other number है वो है x, करेक्ट? यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, x है। दूसरा नंबर है 90 और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 10,800। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे सिंपल रूल ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। इफ आई टेक 90 टू दैट साइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यू कैन डेफिनेटली से इट विल बी 120। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 10,890, इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। अगर प्रोडक्ट ही 10,800 है तो उससे ज्यादा वो नंबर हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट। 10,710, इज इट पॉसिबल? 10,710 एंड 90 का मल्टीप्लीकेशन अगेन 10,000 आएगा, नॉट पॉसिबल। सी तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। 9,72,000, वे मोर देन 10,000, impossible thing. So definitely option D ही correct आएगा। So without actual calculation also you can solve this. Next, again simplification का question है, चलिए solve करते हैं। 2.5 plus 2.5 now divided by 0.5 into 2 minus 4. We have to simplify this. आप सबको सिंप्लीफिकेशन के रूल पता है। सो बॉडमास रूल आप सबको पता होगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन and subtraction. This is the order in which we have to do the operation. Now if you see
द फर्स्ट कम्स हियर इज डिवीजन, सो पहले हम डिवीजन करेंगे, सो 2.5 प्लस 2.5 divided by 0.5. Can I say it is going to be 5? Right? आप करके देख सकते हैं. Into 2 minus 4. So चलिए next multiplication करते हैं. 2.5 plus 10 minus 4. So it will be 2.5 plus 10 minus 4 is 6. 6 plus 2.5, which is nothing but 8.5, which is option B is the correct answer. काफी simple question था. मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट कर दिया है, सो वेरी गुड. नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. यस, इट इज वेरी वेरी सिंपल. कोई सा भी क्वाड्रिलैटर हो, राइट, the sum of four angles of any quadrilateral I will say, not just square, rectangle and so on, any quadrilateral, the sum is going to be 360 degree. So यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है 360, so टिक करिए without any further delay, right? Next, चलिए अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन. यहाँ पे साइंस के साथ आपको कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे. चलिए -3 यहाँ पे लिखते हैं. क्वेश्चन क्या है? -3 इन ब्रैकेट 3 माइनस अगेन वन मोर ब्रैकेट 2 -3 प्लस 5 -7 एंड ब्रैकेट क्लोज. वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनसाइड ब्रैकेट से एंड देन वी विल कम आउटसाइड. सो पहले माइनस है, ओके, जस्ट यहाँ पे माइनस है, नॉट -3, सो करेक्ट करते हैं, सिर्फ माइनस है बाहर, ओके, इन ब्रैकेट 3. सो पहले ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे. 2 -3, इट विल बी -1 प्लस 5 -7. क्लियर? वन ऑपरेशन एट अ टाइम, डोंट गेट कंफ्यूज. एक ही बार एक ही ऑपरेशन. पहली बार हमने इनसाइड वाला ब्रैकेट सॉल्व किया. नेक्स्ट, minus in bracket 3 minus into minus it will be plus 1 plus 5 minus 7 as it is. Now let us perform. Solve this bracket. 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, correct? 3 plus 1 is 4, 4 plus 5 will be 9, 9 minus 7, and now further I will write it here. Minus 9 minus 7 will be nothing but 2, minus into plus, so it is going to be minus, so final answer is going to be -2, which is option A. So again थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, रूल्स यूज ठीक से करने हैं, सबको करेक्ट आंसर आएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सिंपल क्वेश्चन, आप सब ने किया है, फिफ्थ क्लास में किया होगा. 1996 और 10 का HCF हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो सिंपली HCF का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 1996 और 10 को डिवाइड करने वाला इन ऑप्शन में से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा? सो इफ यू सी 6 is also you can say 6 divides 90, 6 also divides 96, correct, but 6 10 को divide करेगा क्या? Definitely it will not divide. Next, if you see 10 90 को डिवाइड हो सकता है, 10 को हो सकता है, 96 को हो सकता है क्या? Definitely not, right? And now if you see 2, definitely 90 96 और 10 तीनों को कॉमन होगा, और definitely we can say it is going to be the HCF of 90 96 and 10, right? चलिए, so one small uh, announcement regarding the special batch for Vidyadhan Academy for Sainik School, which is going to be held on 21st of December, right? So do contact on the given numbers. काफी क्विक बैच होने वाला है, प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है, क्विक रिवीजन, और नॉट ओनली क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्विक रिवीजन हम डेफिनेटली ले रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What is the sum of -36 and 29? -36 plus 29. Two integers are there. -36 negative integer, 29 positive integer. Now, if you see simple, all of you know the rules.
if they are having the different sign, we have to subtract. 36 minus 29, we can say it is 7. The sign of a greater number, which is minus, so it will be minus 7. So option C is the correct answer. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 184, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन. सो देखिए स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आपने बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और ट्राई करना है कि कम से कम मिस्टेक्स हो, साइंस में कोई मिस्टेक्स ना हो, ताकि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा. 184th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 16 डिवाइडेड बाय 4 and again the answer has to be divided by 4. Now see, first we will solve the bracket again. Inside the bracket there is division only, so 16 divided by 4 is 4, and again it is to be divided by 4, so 4 by 4 is nothing but 1. So option D is going to be the correct answer, right? Okay, next question. 185. Anju scored 39 marks out of 60 in maths test. What is a percentage of that marks? So simply we know how many marks she has scored. 39 marks out of how much? So out of 60, that will be in the denominator. How many marks she has scored? It will be in the numerator. Total marks will be in the denominator, and we have to find its percentage, so multiplied by 100. So now we can say these two zeros will get cancelled. 3 2s are 6, 13 3s are 39, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 13 into 5, which is 65%. So we can say option D is the correct answer. Simple. Next. चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. 67.395 into 7. Right. Now see, without any multiplication I will solve this question, because आप इसको multiply करेंगे. If you see the options, you can go by the options itself, right? If you see the options, no need to multiply. But this kind of a trick you need to think, and this kind of a trick you will come to know only when you practice more and more questions. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको इस ट्रिक के बारे में कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो 186 क्वेश्चंस में देखिए विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 47.1765. इज इट पॉसिबल? 67 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सो डेफिनेटली इसका आंसर जो है 67 से तो बड़ा आएगा. सो ऑप्शन ए आ सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं आ सकता. सो ऑप्शन ए विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. एक ऑप्शन तो चला गया. ठीक है. नेक्स्ट, if you see, this is 47,176.5. now see how you can take approximation. 67 को let us say हम ले सकते हैं, let's say 60. okay, approximate 67 नहीं ले रहा मैं, 60 ले रहा हूं, राइट? अगर 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसका आंसर अराउंड 420 आएगा. करेक्ट? मतलब हमारा आंसर जो है वो 400 से 500 के बीच में आना चाहिए. करेक्ट? नॉट मोर देन 500, नॉट लेस देन 400. राइट? सो अगर रिमेनिंग ऑप्शंस हम देखें, 47,000, ये ऑप्शन पॉसिबल होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा. इफ यू सी ऑप्शन सी, 44,700, इज इट पॉसिबल? नहीं. हमारा आंसर जो है 400 से 500 के बीच में आना चाहिए, सो सी भी ऑप्शन नहीं होगा. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो वी कैन से हियर दैट the correct answer without any calculation we have found out, it is option D, that is 471.765. आप जब घर आके वो चेक करेंगे तो यही आंसर आएगा. ठीक है, लेकिन आप वहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा. सो ये बात जो है ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, द थ्री consecutive odd numbers is always divisible by. Now take any three consecutive odd numbers. Take any three consecutive odd numbers. Let us say if I start from 5, 5, 7, 9. And if you take, let us say, the sum, 5 plus 7, 12, 12 plus 9,
it will be 21. Correct. Next, if I take 1, 3 and 5, take the sum 5, 3 and 1. How much is that? Again, it will be 9. The three consecutive odd numbers will always be divisible by what? Which is that number? It will always be divisible. So you can say यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने sum के बारे में बोलना चाहिए. The three consecutive numbers, that is the sum. यहाँ पे sum बोलना चाहिए था. अगर factors बोलते हैं तो we can say it is 1. अगर sum बोलते हैं तो it is 3. सो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा अगर सम यहाँ पे वर्ड होता. लेकिन इस भी क्वेश्चन में इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर हम देखें, द थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बस ऐसे ही दिया है. अगर हिंदी का देखें, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, योग मतलब सम, सदैव किससे विभाज्य होता है. सो यहाँ पे सम जो वर्ड यहाँ पे देना चाहिए था वो मिसिंग है. राइट. चलिए देखते हैं अभी आंसर की में क्या आता है. नेक्स्ट, 75%, 15. If 75% of a number is 15, we have to find that number. Okay, let us find. We do not know that number, so let us consider, let the number be x. Correct. Now what is given? 75% of that number. So I can write 75% of x is 15 means equal to 50. So यहाँ पे 75 by 100 into x is equal to 15. So x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. टेक द नंबर्स टू राइट हैंड साइड. 15 100 डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा. सो 15 5s are 75. 20, so we can say x will be equal to 20. So 20 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए. सो यही करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the least number which when divided by 24, 36 leaves in each case the same remainder which is 8. What is that least number? So इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 और 36 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 ही आता है? अगर 24 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 8 आता है, 36 से करेंगे तभी 8 आता है. सिंपली first you go by the options. If you see option A, if you divide 24 73 by 24, 24 3s are 72, रिमाइंडर 8 है क्या? नहीं है. ऑप्शन ए विल नॉट बी देयर. 36 का चेक करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों केस में 8 ही आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू सी नेक्स्ट 24 3s are 72, व्हाट इज द रिमाइंडर? इज इट इज इट 8? नो, इट विल बी 7. सो बी भी ऑप्शन नहीं आएगा. ठीक है. Now if you see option C, 24 3s are 72. Now the remainder is 8. Correct. Now if you look at option D, 24 3s are again 72 because 24 4s are 96 हो जाएगा. 24 3s are 72. Remainder 8 है क्या? नहीं है. D भी ऑप्शन नहीं आएगा. So correct option will be option C. Again यहाँ पे भी मैंने without calculation, just going by the options, we have found out the answer. सो ऐसी ट्रिक्स जो है आपको समझ आनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम इन द एग्जाम हॉल, और वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है. जो आप करेंगे ये मेरा डेफिनेटली अनुमान है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सिंपल क्वेश्चन, 0 डिवाइडेड बाय 27,523. ना आप सबको पता है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर हाउ एवर बिग इट इज, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द आंसर इज गोइंग टू बी 0. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज 0. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ 1 अपॉन 0 और एनी नंबर अपॉन 0. डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड. अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका आंसर आएगा 0. सो 0 अपॉन एनी नंबर विल बी 0, बट एनी नंबर अपॉन 0 in the denominator if it is a 0, it will be not defined. Right.
चलो, next question will be 191. The least number of 4 digits which is exactly divisible by 7. 7 से exactly divisible होने वाला least number, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन ऑप्शन में से चूज करना है, राइट? So now again here also you can go by the options as well, correct? So you can take the option 1007, or simply you can use a divisibility test also. If I say, just a second, हाँ, हम लेट से डिवाइड करते हैं 1007 को 7 से. So 7 1s are 7, 3 remainder 30, 7 4s are 28, 2 remainder, no, 27 will not be divisible. Then 1001 divided by 7, 7 1s are 7 again, 7 4s are, and 7 3s are 21. So यहाँ पे divisible हो गया है. And C, option B डिविजिबल हो रहा है. एंड इफ यू सी फ्रॉम द ऑप्शंस, 1001 ही ऐसा नंबर है जो लीस्ट है, जो सबसे छोटा है. सो बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग लीस्ट नंबर, सो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा. क्लियर? सो अगेन टाइम यहाँ पे सेव हुआ है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The average of four numbers is 16 and the average of another four number is 20. Find the average of eight numbers together. Simple. अगर फोर नंबर का एवरेज 16 है, सो क्या हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स? यस, वी कैन फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन से वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन एवरेज बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? फोर, सो इट विल बी 64. Now next four numbers का you can say sum find out कर सकते हैं क्या? Yes. So for sum of second four numbers will be nothing but average है 20, numbers चार ही है, so sum आएगा 80. So हमें अभी फाइंड आउट करना है फाइंड द एवरेज ऑफ एट नंबर्स टुगेदर. सो एवरेज हम पता है सम ऑफ ऑल द एट नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं. सो सम ऑफ फोर नंबर 64, सम ऑफ अनदर फोर नंबर्स 80. सो इसको हम ऐड करेंगे 64 प्लस 80, और टोटल अभी एट नंबर्स है, so it will be divided by 8, so it will be 144 divided by 8, so we can say it is going to be 60. So यहाँ पे option A is going to be the correct answer, right? चलिए next question. The HCF of 12 and 16, very simple question. 12 and 16 का highest common factor. 12 and 16 का highest common factor इन ऑप्शन में से 6 तो definitely नहीं होगा. 2 and 1 they are factors but they are not the highest factors, so option B is the correct answer. 4 is going to be the HCF of 12 and 16. चलो next question. Ramesh packed 1350 apples equally into bags of 5 apples. How many bags did he need? So यहाँ पे total apples है 1350 and he want to pack that 5 apples in one bag. So that means if we divide this total number of apples by 5, we will get the number of bags required. So 1350 divided by 5, if you do 5 2s are 10, 5 7s are 35. So we can say it will be 270. Option B is the correct answer. Simple. चलिए next question की तरफ. Just a second. हाँ. LCM of two numbers is 28 times of their HCF. The sum of their LCM and HCF is 1740. If one of the number is 240, what is the other number, right? Now see, you know the formula. HCF into LCM is going to be product of two numbers. So product of two numbers will be equal to HCF into LCM. Now what is given? LCM of two numbers is given, right? What it is given in terms of what? Relation. What is that relation? LCM of two numbers is 28 times of their HCF. That means, let us say we do not know the HCF, correct? So HCF
and LCM is what? 28 times the HCF. And now sum of LCM and HCF is also given to us. We have one number is 20, let us say other number is X, correct? One more thing, what is given to us? The sum of LCM and HCF. LCM plus HCF is given to us as 1740, and LCM is 28 times of HCF. So 28 times of HCF plus HCF will be equal to 1740, correct? So this will be 29 HCF is equal to 1740. So यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं. HCF आएगा 1740 divided by 29, correct? Now if you see, here there is 9 in the unit place, here there is 4 in the unit place. So what should be that number that I should multiply with so that I can get 4 in the unit place? Can I say it is going to be somewhere around 6? So 6 nines are 54, then 5, 6 twos are 12 plus 5 is 17. So we can say it will be 60. So now we have got 60 into 28 times of 60 is equal to 20 into X, correct? Now here you need to find out what is that other number. So we can say if HCF is 60, LCM is 28 times of 60. So we can then find it out, right? So this is going to be X is equal to 60 into 28 into 60 upon 20, because HCF into LCM is going to be one number into other number, correct? यहाँ पे हमने 28 times HCF plus HCF 29 times HCF is 1740. So HCF यहाँ पे बन रहा है हमारा 60. अगर HCF 60 है, LCM 28 times of 60 होगा. One of the number is 240, not 20. Just correct, let me correct it here. यहाँ पे है 240. Okay. 240, 240. सो यहाँ पे ये डिविजिबल भी होगा 240 से, ठीक है? सो डिनोमिनेटर में आएगा 240. सो 60 इंटू 4, अगेन 15 इंटू 4, और ये आएगा x इक्वल टू 15 इंटू 28. सो वी कैन से इट विल बी 420. सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? नेक्स्ट, the sum of all prime numbers between 58 and 68. 58 और 68 में की सभी प्राइम नंबर्स की सम. सो चलिए पहले प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. प्राइम नंबर्स आप सबको पता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself is called as prime numbers. So 58 and 68 के between, right? So यहाँ पे excluding the two numbers we have to find. So 59 first prime number आएगा, then it will be 61, correct? Then 62 is not a prime number, 63 again not a prime number, 64 नहीं है, 65 is it a prime number? Definitely not. 66 again definitely not a prime number, right? 67 prime number है. Now if you see 9 plus 1 10, 10 plus 7 is 17, carry 1, 6 plus 6 12 plus 1 13, and 5 18. So 187 is the correct answer, which is option number C, right? Okay, next question. 10 men can do a piece of work in 4 days. How many men will be required to get the same work done in 5 days? Now this is a question on ratio and proportion, inverse proportion we can say, right? So 10 men can do a work in 4 days. So how many men can do a work in 5 days? So let us say X men will do that work in 5 days, because inverse proportion में product of the two numbers, product of the two quantities will remain constant. So 40 will be equal to 5x. So यहाँ से हम x find out कर सकते हैं, which is nothing but 8 days. Correct? So यहाँ पे option A correct answer होगा, right? Similar question है, same exactly.
36 boys can do a piece of work in 49 days. So यहाँ पे total work consider कर सकते हैं हम 36 into 49. How many extra boys should be engaged so that the work may be finished in just 21 days, right? So let us first find out how many boys will be required to complete the work in 21 days. Let us say X boys will be required to complete a work in 21 days. So X will be equal to how much? 36 into 49 upon 21, right? So 7 sevens are 49, 7 threes are 21, 12 threes are 36. So X will be equal to how much? It will be 84. But you might be thinking 84 तो आंसर में नहीं है. नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स्ट्रा बॉयज कितने चाहिए. सो ऑलरेडी हमारे पास 36 बॉयज है, हमें रिक्वायर्ड 84 है. सो एक्स्ट्रा कितने होने चाहिए? 84 माइनस 36. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 48 बॉयज हमें एक्स्ट्रा चाहिए. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज on reversing the digits also. So what is that smallest 3 digit number which will not change? So even if we reverse the digit, see 888, if we reverse it in any way, definitely we can say that it will be not changing. 999 भी है लेकिन यहाँ पे smallest पूछा है, so option B is the correct answer, right? चलिए, and the last question of maths. 8, the what is the exponent of 8? So exponent of 8 यहाँ पे क्या आएगा? अगर simply 8 है, so what is the exponent? There is nothing means the power is going to be 1, the exponent is going to be 1. So this is going to be the exponent. So we can say exponent of 8 is 1. So option B will be the correct answer, right? Yes, so that was a discussion from my end. I hope ये discussion आपको अच्छा लगा होगा, right? So thank you so much everyone for listening to this discussion. ऐसे सारी questions paper जो remaining है English होगा, इंटेलिजेंस का होगा एंड जनरल नॉलेज का भी होगा. सो इसके बाद की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अ, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए RMS RIMC और सैनिक स्कूल्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल्स पे कंटेंट आता रहेगा. तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. कीप वर्किंग हार्ड, कीप saving time and try to practice more and more in, because in maths the more you practice the more you will be perfect in solving. Thank you so much for joining.